Assalamualaikum. How are you all? Welcome to the English class. I hope you have written the central idea of the poem. Today is a lesson of grammar, and I am your teacher, Foqiya Kanwal. Let's start today's lesson. Yes, today we are doing the exercise of stopping by words in a snowy evening. और exercise में हम क्या करने जा रहे हैं? By the end of the lessons, we will be able to know the definition and examples of suffixes, form new words by adding the suffix y, and know the definition and examples of abbreviations. And also, we will do the exercise. Okay, students, we are going to read suffix. You have studied the prefix in the class 4. Recall? Yes. Prefix is some letters which we added at the start of the word. हम किसी भी word के start में कुछ letters को add करते हैं तो वो prefix होता है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं suffix. अब suffix क्या होता है? A suffix is a letter or group of letters added at the end of the word which makes a new word. जिससे new word बनता है ना मजे की बात. The suffix changes the meaning of the word. अब suffix की add करने से उस word का meaning change हो जाता है. We have some words here. Here is a noun. Hairy. हमने y add किया तो उसमें adjective. Sun, noun, sunny. Adjective. Fun, noun, funny. Adjective. Cloud is a noun and cloudy. Adjective. Stone is a noun and stony. Adjective. अब इन सब एग्जाम्पल्स में क्या सफिक्स है? व्हाट इज द सफिक्स इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स? वाई. यस, इट्स अ वाई. हमने इन सब एग्जाम्पल्स में वाई ऐड किया है. इन एग्जाम्पल्स में वाई जो है वो सफिक्स है. When it is added to the word, it means having or being like. जब हम y को किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो उसकी तरह का है, being like, or it's having the thing. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बैग. वर्ड है हमारा बैग, हमने y ऐड किया तो उसका क्या मतलब हो गया? हैविंग अ बैग और इट्स लाइक अ बैग, तो बैगी. वेव, हमने y ऐड किया, हैविंग वेव्स और लाइक अ वेव, इट्स अ वेवी. इफ द वर्ड्स एंड इन ई, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग द सफिक्स. जब वर्ड्स ई पे खत्म हो रहा हो तो फिर हम उसके साथ सफिक्स लगाने के लिए हम उसमें से ई ड्रॉप कर देंगे. Now we have exercise B2. Exercise में हमने क्या करना है? Add suffix y to the following words and then use the new words adjective in the sentences of your own. We have word fluff. Fluff is a noun. Fluff means top fibers from the fabric such as wool or cotton. Soft fibers cotton के, ठीक है, उसे fluff कहते हैं. अब हमने इसके साथ y ऐड किया तो क्या बन गया? Fluffy. तो ये एडजेक्टिव बन गया फ्लफी, लाइक फ्लफ और कवर्ड विथ फ्लफ. अब हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं. थिंक अबाउट द सेंटेंसेस. यस, फ्लफी, क्योंकि कभी कैट जिसके ऊपर उसकी सॉफ्ट सी फर होती है. यस, ही हैज अ फ्लफी कैट. क्लाउड्स, फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग अक्रॉस द स्काई. इट्स अ वेरी फ्लफी काइंड ऑफ वूल. नाउ वी हैव द अदर वर्ड फन. हमने ऐड किया तो ये बन गया फनी. फन इज अ नाउन और ये हम एडजेक्टिव बन गया हैविंग फन, कॉजिंग लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट. सेंटेंसेस हमारे फनी. हिज फनी ड्राइंग अम्यूज द किड्स. ही इज सो फनी दैट ही हैज मेक्स मी लाफ. द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट द फनी स्टोरी. देन वी हैव लीफ. लीफ के साथ हमने ऐड किया तो क्या बन गया? लीफी. लीफ नाउन था, हमने ऐड किया तो ये एडजेक्टिव बन गया, मीन्स हैविंग मैनी लीफ और लाइक अ लीफ और लीव्स. अब हम इसके क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं? यस, वी सैट इन द लीफी शेड ऑफ एन ओक ट्री, ईट प्लेंटी ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, द ट्रीज फॉर्म्ड अ लीफी कैनोपी अबव देयर हेड्स. नेक्स्ट वी हैव शुगर. वाई हमने ऐड किया? शुगरी. शुगर आपको पता है क्या होती है? स्वीट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस obtained from sugar cane and sugar beet. चीनी, हमने शुगरी. हैविंग शुगर, जिसमें किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा शुगर हो, शुगरी.
Sugary cane drinks rot your teeth. No one was caught by sugary words. किसी को बहुत मीठी मीठी बातें करें तो उसे भी sugary words कहते हैं. बहुत मस्के लगाए. Eat fewer sugary food like cake. Then we have bend. Bend के साथ bend is a noun, a curve in a road, river or path. Why add किया? Bendy. Adjective, having many bends. Bendy. It's bendy, so I worry that it could break. The road is bendy. This is a bendy ball with a rattle inside. Okay, now we have another exercise. Add the suffix y to the following words, and not all words can take the suffix y. Red, ruddy. Its spellings has been changed. E की जगह u आ गया. Run, runny. Shade, shady. Close, close से closey बनेगा? No. Shout से shouty बनेगा? No. Thorn, thorn से thorny. Wait से weighty. Cold से coldy होता है? No. Snow से snowy. And sun से sunny. Okay students, now move to another part of exercise, abbreviation. आपने 4th class में भी abbreviation पढ़ी थी, याद आ गई होंगी, है ना? So क्या होती है abbreviations? Abbreviation is a shortened form of a word or phrase. किसी भी word या phrase की short form को abbreviation कहते हैं. The word abbreviations come from the Latin word brevis, meaning short. Usually it consists of a letter or group of letters from the word or phrase. किसी भी word और phrase के कुछ letters या initial letters से मिलके abbreviation बनती है. अब abbreviation may consist of initials only. बाज़-औक़ात सिर्फ first letter. Sometimes a mixture of initials and word. कुछ words या initials का mixture. And sometimes words or letter representing words in other language. कुछ ऐसे भी words होते हैं जो किसी other language को represent कर रहे होते हैं, जैसे I, E, E, G, A, M. What are something we abbreviate? किन किन चीजों को हम abbreviate कर सकते हैं? Days of the week, titles of people, months, locations and measurements. अब abbreviate the following. मेरे साथ abbreviate करें इनको. Master of Science M.Sc. His or Her Majesty H.M. Member of Parliament MP. School Leaving Certificate SLC. Trade Union TU. Southeast SE. Master of Arts MA. Doctor of Medicine MD. Doctor of Philosophy PH और इसे DPhil भी कहते हैं. Bachelor of Education BED. इसको आप ED small भी लिख सकते हैं या B.ED इसको हम capital भी लिख सकते हैं. Okay students, now we have homework time. Make new sentences of following words. आपने इन सब words के new sentences बनाने हैं. Fluffy, funny, bendy, leafy and sugary. Abbreviate और आपने करना है terms को abbreviate करना है. British Broadcasting Corporation, Before Christ, Doctor, Monday and January. Okay students, it's today's lesson. I hope you have enjoyed it, and you must have to do the exercise and you have to do the homework.